So yesterday we have proved this answer wrong. Okay, the thing was we proved it wrong that this was actual answer is 107265. You can put the values 100200 plus 2.57 or 2.58 because both are acceptable over here into 15,000 by root of 30. So we get the confidence interval of this range 99%, that the average data scientist salary is going to lie between the interval of this. Okay, we also talked about this restaurant that is 22.5 pounds. You just went to the 5% of the restaurant in a certain city and you came to a conclusion that the average price is 22.5 pounds. So you made sure that you put some confidence intervals and you came to the solution of 20 pounds to 25 pounds. Okay. So what is alpha and what is confidence interval? Confidence level. Confidence level 1 minus confidence level is this alpha. I mean 100% minus confidence level is alpha. Okay. So this was the formula that we used. Okay. That is x bar. Point estimate means x bar. So what is point estimate? I'll again show you what is point estimate is. Single number रहता है. Point estimate मतलब एक single number रहता है. It is not like kind of an interval. Okay. You get a mean. Mean बोले तो single number आ जाता है. You cannot have 2 or 3 means for the same data. Okay. So here confidence interval हमने population variance known देख लिया था. हमने z-score use किया था. Population variance unknown देखना है अभी. How do we calculate for unknown population? I hope everybody remembers this data. So now this is the data set, and now we'll be going for this data set. Okay. Here you don't have any standard deviation known. Okay. See, ये population नहीं था, ये population नहीं था, लेकिन हमें असली population का standard deviation पता था. I'm talking about sigma, right? I'm talking about sigma. Our formula was, the standard error was sigma by root n, right? यही था ना standard error हमारा. This is a bracket. Huh? Yeah. So ये था. So we multiplied it by z alpha by 2. See, I have written it over here. Z alpha by 2 into standard error. Okay. I'll be going pretty slow. I haven't put more slides today. I have made another PPT for next kind of topic, but still I'll go pretty slow. You ask me any query you have because it's a very important topic. Okay. तो 99% अभी यहाँ हमने क्या कंक्लूजन डिराइव किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अभी हम इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल के टर्म्स में लिखते हैं. सबसे पहले विल जस्ट राइट इट इन कॉन्फिडेंस इंटरवल टर्म्स. यू विल गेट द कंक्लूजन व्हाट वी गॉट. ओके, इंटरवल. ओके, सो कॉन्फिडेंस इंटरवल वाज मिनिमम वाज 95, 704, 709.04, comma 104, 691. Okay. Oh my god, I'll remove this comma. Huh? ये range है, यहाँ square bracket. This is our interval. Okay. So I'll just make it here. Yes. So similarly here confidence interval will be 94,832, 105,568. Okay. The thing is, when we were 90% confident, when we wanted with assurance of 90%, we got a range which had a deviation of 8982.65. मतलब ये इतना ही deviate करता है. 8982.65 का फर्क आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई वैल्यू बोल दिया तो वो इसी रेंज के बीच में आएगा, और ये रेंज का मिन और मैक्स के बीच का रेंज है 8982. लेकिन हम जैसे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लाइक व्हेन वी इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस परसेंट टू 95%, वी गेट अ मोर रेंज, ज़्यादा रेंज मिलता है. तो मतलब हम जितना कम कॉन्फिडेंस लेवल रहते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उतना नैरोअर होते जाता है. ये इसका वैल्यू ऐसा था. ओके, दिस वन,
ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो वैल्यू है इसका ऐसा था, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा स्प्रेड हो गया, लाइक इट बिकेम अ बिट ऑफ लाइक दिस, ये थोड़ा स्प्रेडेड है ना, और ये तो उससे भी ज़्यादा स्प्रेड हो गया, लाइक इट्स 14,000 का रेंज मिल गया मुझको। सो ये ऐसे हो गया, इट्स लाइक काइंड ऑफ अ स्प्रेडेड। तो ये एरिया बढ़ते गया, ओके, बिकॉज आर दिस थिंग गॉट इंक्रीज्ड z अल्फा बाय 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर। ये जितना इंक्रीज होते जा रहा है वो उतना ही ये भी इंक्रीज होते जा रहा है, ओके। सो नाउ अभी हमारे पास पिछली बार असली पॉपुलेशन, ये तो सैंपल था, असली पॉपुलेशन का $15,000 करके हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन था, लेकिन यहाँ इस डेटा सेट में हमारे पास असली पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, ओके। सो व्हाट वी डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, now that is the question, okay, now I'll show you what we have to do. So we have to use students t distribution, okay. So what is students t distribution? Students t distribution is used for those kinds of distribution, it's a kind of a normal curve ही रहता है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। So देखो ये normal distribution होता है, right? Sorry, I'm using same color pen, okay. So ये normal distribution है, okay, like it is like this. When I draw students t distribution and its axis is like this, huh? Okay, this is normal distribution, standard normal distribution होता तो यहाँ जीरो होता, origin पे होता, ये पूरा चीज यहाँ होता, okay. Now what is students t distribution? Same axis kind of मैं बनाता हूँ, okay, sorry. So ये समझो ये axis है, okay, okay. So students t distribution would be having fatter tails. It is similar to normal distribution but it is having fatter tails. ये distance बड़ा होता है students t distribution कंपैरेटिवली, ये डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि ये इसका क्या फायदा है, क्योंकि ये इन्फरेंसेस थ्रू स्मॉल सैंपल से हमें बता देता है आइडिया क्या है इसका, ठीक है। और अननोन पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन का वेरिएंस हमें पता नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन पता नहीं है अननोन पॉपुलेशन का, ह्यूज रियल लाइफ एप्लीकेशन, ओके। ये बहुत जगह पे अप्लाई होता है, प्रिडिक्शन में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। सो विल मूव, ओके। सो स्टूडेंट्स ट्री डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होता है, प्लीज नोट इट डाउन, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाय रूट एन, ओके। सी बट एज आई सेड इट हैज फैटर टेल्स, दैट मीन्स इट हैज मोर अनसर्टेनिटी, हाँ। इसमें हमें सही एग्जैक्ट वैल्यू मिलना मुश्किल है, लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा होता है, बट वी गेट इट, हमें जो चाहिए होता है वी गेट इट, हाँ। इट्स नॉट लाइक हमें मिलता ही नहीं है, काइंड ऑफ, it's not that kind of thing, okay. So the question asked over here is just a second, I'll okay, this is the formula, and if you want to compare with normal distribution and students tree distribution, this is the thing मैंने बोला था कि ये फैटर टेल्स है, सो अल्टीमेटली ये थोड़ा सा छोटा होता है, दिस इज लेंथ, उसका जो हाइट होता है मैक्सिमम हाइट वो थोड़ा सा छोटा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। व्हाइट वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑरेंज वाला स्टूडेंट्स ट्री डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, ओके। सो व्हाट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? नंबर ऑफ सैंपल माइनस वन, जितने नंबर ऑफ सैंपल होंगे माइनस वन, ठीक है। एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन, ये उसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट, ओके। सो पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन और पॉपुलेशन वेरिएंस नोन का ये फॉर्मूला है। यहाँ देखो, यहाँ एस है, ये सिग्मा है, ये असली पॉपुलेशन वेरिएंस है, मतलब वेरिएंस का रूट है, दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन। जब हमें वेरिएंस पता था तो हमने उसका रूट ले लिया था, तो हमें इसका स्टैंडर्ड डिविएशन मिल गया। यहाँ हमारे पास इसका ये नहीं है, व्हाट डू वी से, वी डोंट हैव द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, but we can find the standard deviation of this sample given, okay. Population variance unknown, but we can take it as sample
वेरिएंस, हम इसको वेरिएंस ले सकते हैं, सैंपल का जो वेरिएंस है वो हम निकाल सकते हैं. यू नो द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, राइट? ओके, सो नाउ विल गो टू दिस टेबल. अभी एक्सेल दिखाता हूँ. दिस इज द टी स्कोर. हमने जेड स्कोर से किया था. ये टी स्कोर है. डीएफ मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. हियर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज गिवन, हियर द अल्फा वैल्यूज इज गिवन. So now you can only use these alpha values. Okay, like for example, if your one second, yeah, like for example, if your alpha is 0.1, मतलब तुम 90% use कर सकते हो. Okay, you can use it till 90%. Confidence level कौन से use कर सकते हो फिर, वो मैं बता रहा हूँ. Confidence level. Okay, so the confidence level would be 90 you can use. Okay, 95 you can use. Okay, 99 also you can use. Here alpha by 2 नहीं है, ये alpha by 2 नहीं, ये alpha का ही value है सीधा. Okay, but now if we want alpha by 2 we can take it as alpha by 2. Yes, so we want actually alpha by 2. Okay, so ये सारे limited data ही आप use कर सकते हो. So you just take note of it. तो ये टी स्कोर का टेबल है. यहाँ हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल भी दिया हुआ है, देखो 80, 90, 95, 98, 99. तो ये 80% दिया है. दैट मीन्स द अल्फा बाई 2 वैल्यूज बीइंग गिवन ओवर देयर. ओके, सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन क्या है? या दिस इज आवर क्वेश्चन. प्लीज रीड इट आउट. मतलब क्वेश्चन एक बार देखो. दिस इज बैकग्राउंड. Calculate the mean and the standard error of the data set. We need to find the mean. What is its mean? इसका mean चाहिए हमें. Okay, I found the mean. Okay, now mean and standard error. Now what is the formula for standard error? Standard error for this will be s upon root of n. So first I need to calculate standard deviation. Sample, okay, of this sample. तो हम sample का ही formula use करेंगे. Standard deviation sample यहाँ है. So I'll be choosing this. Okay, okay, so number of sample would be equal to count. Just give me number of values. 9 values है. Am I right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yes, so I need its root. Okay, ये भी डेटा साइंटिस्ट का ही सैलरी है, मतलब इन, बट वी डोंट नो द ओरिजिनल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन. ओके, ओरिजिनल पॉपुलेशन का हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है. सो इट इज आस्किंग मी टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर. ओके, सो नाउ आई विल जस्ट गो विद दिस डिवाइडेड बाय, इसका रूट 3 है. आई कैन इवन पुट 9 to the power 0.5 bracket close and all, but still I am putting it in a simple way. Then determine which statistic to use for inference. Okay, अभी ये कौन सा statistic to use for inference? We don't have uh, population standard deviation, hence we use students tree distribution. Okay, okay, हम students tree distribution use करते हैं, which is related to t score. ठीक है, हम ये यूज करते हैं. Find appropriate statistic taking into consideration the degrees of freedom if applicable for 99% confidence. Now we have to calculate for 99% confidence. Just a second, I might have done the calculation somewhere. I'll just show you like how much is there for. I have done for 95%. Okay, 95% किया है मैंने. Here I have taken it for 95%. Okay, so we'll do it for 95% and we'll see whether we get the same value or not. Okay, so 95%, our confidence level is 95%.
95%. So what would be my alpha value? Please reply someone. 5%. Okay, 5%. Good. So now I need to know my alpha by 2. So that would be 2.5%. Okay. So now I need to go for the degrees of freedom. Here the degrees of freedom will be, how much will be the degrees of freedom? So now we have t of 8, like I'll go back to this formula, t 8 comma alpha. This is the thing, but the actual thing we need is t 8 comma alpha by 2 s root of n. Okay, s by root of n. So now we'll be referring this t table. Okay, our confidence interval was 95%, right? 95%. Okay, so 1 second. Yes, so my confidence interval is 95%, so my alpha by 2. So I need to refer this. See, here confidence interval is given 95%. Okay, CI stands for confidence intervals, 95%. Okay, so my alpha will be 5%, but I need alpha by 2, since in the formula it is asking alpha by 2. Okay, over here alpha by 2 पूछा है. Okay, we have calculated s by root n. Have we calculated s by root n? Yes, we have calculated this s by root n. I'll just put something over here. S by root 10, where is it? Okay, this is my s by root n. S by root n. Okay, s by root n निकाल लिया. अभी हमें क्या चाहिए था? tn minus 1 comma alpha by 2. Okay, so tn minus 1, that means t8 comma 8 comma 2.5, मतलब 0.025. Okay, so 0.025. Where is my 8? This is 2.306. So my t score will be 2.306. इसमें ऐसा आइडेंटिफाई करके रो और कॉलम को ऐड नहीं करना है. यहाँ हमें रो और कॉलम के बेसिस पे हमें वैल्यू निकालना है. ओके, दिस इज द डिफरेंट मेथड फॉर टी स्कोर. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, 2.306. okay, this is my t score. I'll just write it down so that it doesn't create a confusion. 2.306. okay, so now I have the standard error. okay, तो मुझे 2.306 इससे मल्टीप्लाई करना है. okay, so now t, that is alpha by 2, sorry, n minus 1 comma alpha by 2, n minus 1 comma alpha by 2 multiplied by standard error. okay, so what will I get? That is equals to 2.306 0.0708977. okay, this is the answer for this. okay, now we need a mean. हमें mean था ये 92. so our min value will be, min value कितना होगा इसका? this, no, I think we are going somewhere wrong. Are we going somewhere wrong? They have taken 2.31 and they got a mean of 92,533. How did I get this? Okay, no issues. We'll calculate the mean again if possible. Let me just get verified.
about this. This is my average. Okay, this is my mean, and here my t value is 2.306 into standard error. Is my standard deviation this big? Wait a second. Let me get the variance. Okay. So it is going really big. Okay, no issues. We can still continue with this. So what was this for what I has made 92,533? Yes, 92,533 is the thing. This is the same thing. 4.314644. Okay. Yes, I am actually right. So it goes okay. I'll write it. No issues. Okay. So I got a bit confused that I thought that this is 6 digit. This is actually 5 digit. It's a normal confusion that happens because I did not count the digits. Okay, so the min value would be my sample mean. Okay, minus the this thing. हमें plus minus चाहिए ना? ये minimum हो गया, and the maximum value would be equals to the mean plus this value. Okay, तो हमारा range कितना आ रहा है? What is our how much did this data vary? Okay, how much did this data vary? कितना vary हुआ है ये data? Equals to this minus this. Okay, 21,418. ये इतना फर्क है. Okay, now what we do is हम सेम अभी हमने ये देखा है कि बिना पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन पता चले हमने ये कैलकुलेट किया है. नाउ लेट अस कंपेयर विद दिस. ठीक है, हम इसे कंपेयर करते हैं. यहाँ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है. अभी ये सेम केस लेते हैं और हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं है, समझो. ठीक है, आई एम टेकिंग दैट सेम डेटा सेट. कितना वेरी करता है देखते हैं. लाइक जब हमें पता चलता है और हमें जब नहीं पता चलता है, सो ये कितना वेरी करता है. नाउ विल बी सेम सेम चीज हम करके देखते हैं. लाइक फॉर 95%. ओके, जी स्कोर 95% का ये वैल्यू है. ओके, आई रेज माय स्क्रीन. just a comparison, huh? So I can explain you better instead of showing the ppt and giving you ready made. If we both do it, then we'll get it. Z score, sorry, population वेरिएंस दोनों एक ही. हाँ, लाइक इफ स्टैंडर्ड डिविएशन पता रहेगा तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो. पॉपुलेशन वेरिएंस पता है तो उसका रूट लेकर के लगा सकते हो. नोन, यहाँ नोन है. तो हमें क्या रिजल्ट आया था इसमें? कॉन्फिडेंस इंटरवल वॉज 95%. ओके, हम सेम चीज टी स्कोर से भी करेंगे. सो वेयर वाज इट? इज दिस 95%? यस, 95% का ये आ रहा था. ओके, आई विल कॉपी दिस एंड आई विल पुट इट ओवर. ओके, नाउ इट गॉट एन इशू कि मैंने उसको रेफरेंस नहीं दिया है. Okay, so what we got is
this 94832. 94832. I'll just write it. 94832, and the maximum value was 105568, right? 105568. ओके, तो ये हमें मिल गया था 95% जब ये पता था हमें, like the population variance was known. Okay, now population variance is unknown. Okay, so what we do over here is we use t-score, right? Yes. So now first step was to make mean. ठीक है, mean निकालना है. So what was the mean? Average of all these numbers. Okay, so this was the thing. Yes, so now standard deviation. I need standard deviation, so I just take standard deviation of this sample, because I don't know the standard deviation of this thing, population. इस केस में मुझे पता था, इस केस में मुझे अभी पता नहीं है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिल गया. नाउ नंबर ऑफ सैंपल्स, दैट इज n. व्हाट इज माय n is काउंट, कितना डेटा है. सॉरी. Yes. Okay, n is 30 and count is 30. Okay, now what I need to do is standard error पता करना है. Standard error. Okay, this would be s upon root of n. Okay, ये फॉर्मूला है क्योंकि ये s है, क्योंकि हमारे पास वो डेटा नहीं है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है. ओके, सो इट विल बी this by this raised to 0.5. Sorry, this is to 0.5 bracket close. Yes, so 2095.6606 ये आ गया standard error. Okay, now we need to go for our confidence interval was, as I said, it was 95%. Okay, so our alpha by 2 will be 2.5%. Okay, and our degrees of freedom will be this 10. Yes, right, 29. Yes, so 29, we'll go over here 29. Okay, or 2.5 था, right? 29 and this thing, yeah, so 95% sure था ना, तो 2.045. 2.0, okay, 4 5. Am I right? 1 minute. Yeah, 2.045. Okay, so my t alpha by 2 is n minus 1 comma alpha by 2 is 2.045. ठीक है, so 2.045 into, what was the formula? Standard error. This is my standard error. Okay, s upon root n. What was my what happened actually? Oh, sorry. Yes, so this upon root n, this s upon root n, so this into s upon root n. So my total, this thing, one second, I'll just put it, standard error into t n minus 1 comma alpha by 2. Okay, so I just need this. उसके बाद मीन से प्लस माइनस करना है, तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ.
Okay, Ankit, I'll do it. No issues. You just ask your query after I complete this. Okay. So this would be Tn minus 1 comma alpha by 2 multiplied by this. This multiplied by this. Okay. So we got this answer. Now I want to find the min range. Okay. Min package 95% श्योरिटी में 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में मिनिमल रेंज में क्या आएगा पैकेज तो डेटा साइंस का पैकेज सो व्हाट वुड बी इट इट मीन प्लस माइनस दिस mean plus minus this value this value. Okay, so I'll just put it equal to my mean was this minus min value is this, right? So I'll just put it minus, so I got it 104.486 104 comma 486. No, but actually what happened, I put plus over here. No, something went wrong, I guess. Wait a second. How come it is adding then? Okay, equals to this minus this. Why is it adding or it is putting something? Okay, is my mean wrong, Mr. Omkar? Okay, so you just see that from A8 to A37 I have taken the average. See, my mean is right. Okay, I'll just calculate it again if you want. Yes, now I got the answer 95,915. Okay, maybe I might have chosen this data set as well, so इसलिए bracket आ गया होगा. Maybe small mistakes. Now what is my maximum value is mean plus this. Where did it go? Yes, this 104486. So you now see that why am I getting a steeper value from this? If you see, if it is unknown, we are getting a वेरीड वैल्यू. मतलब ये इससे भी ज़्यादा कम है और ये इससे भी ज़्यादा कम है. मतलब हमें एक अलग रेंज मिल रहा है. इट इज़ नॉट एट ऑल सेम. हाँ, अननोन और नोन में ये फ़र्क है. ये दोनों सेम ही नहीं है. लेकिन नाउ वी आर गेटिंग लाइक दिस. आर यू गेटिंग इट? इन स्टूडेंट्स ट्री डिस्ट्रीब्यूशन we are getting somewhere around within this range. So what I would like to conclude with this is, like in population variance, if it is known, we get a this kind of thing, but when the population variance is unknown, we get a bit of थोड़ा ये मोटा हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में टेल्स फैटर होते हैं. दिस इज अनसर्टन. इतना अनसर्टेनिटी होता है. ओके इतना अनसर्टेनिटी होता है. So that's what I wanted to conclude over here, like how much the value actually changes. So ultimately we proved it. ये समझा है ना आपको? ये वाला हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन पता था पिछले पिछले एग्जाम्पल में, लेकिन इस बार हमें पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर पॉपुलेशन वेरिएंस हमें पता नहीं है. ओके, so what we do is we had put this value. Okay, we had put this value or assumed with respect to the t-score. So this is the formula. It's a simple formula. It's not a big deal. X bar plus minus t n minus 1 alpha by 2 s upon root n. So you know this is the formula. ये हमने ये वाला formula use किया था, right? I have took a screenshot and put. So ये वाला formula हमने use किया था in the population variance. ये वाला formula हमने अभी use किया t square में और t score में.
सो वी गॉट दिस वैल्यू राइट 2.31 ये हमें मिला था 2.306 को राउंड ऑफ किया था इन्होंने मतलब मैंने इस टाइम पे राउंड ऑफ किया है आई एम नॉट डूइंग दिस राइट नाउ बट स्टिल वी गॉट द वैल्यू क्लोजर टू दिस ओके 2.31 we got 2.306 okay now we'll move to margin of error okay this is the margin of error okay like population variance known population variance unknown so I'll just give you the formula x bar plus minus margin of error ये जो चीज है ना ये मार्जिन ऑफ एरर ये है ना ये मार्जिन ऑफ एरर फॉर नोन है और ये जो है ये भी मार्जिन ऑफ एरर ओके दिस इज मार्जिन ऑफ एरर so how does it impact so confidence interval equals to x bar plus minus margin of error okay bigger the margin of error wider the confidence interval आर यू गेटिंग इट अगर हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ाते गए तो फिर वो ज़्यादा मार्जिन ऑफ एरर होता है लेकिन स्मॉलर मार्जिन ऑफ एरर नैरोअर द कॉन्फिडेंस इंटरवल ओके मतलब हम 95 90 रखा तो फिर बड़ा आएगा 99 99.4 रखा we'll be getting it small because it's getting narrower and narrower okay so yes ओके मार्जिन ऑफ एरर का एक फॉर्मूला है रिलायबिलिटी फैक्टर यू टेक इट एज जेड और टी अल्फा बाई 2 स्टैंडर्ड अपॉन रूट एन सो वी गॉट इट राइट तो इसको प्लस माइनस करने से हमें मिलता है स्मॉलर स्टैटिस्टिक एंड स्मॉलर स्टैंडर्ड deviations will reduce the margin of error it is not that important but still you just take note of it like how much is the reliability factor z लेना है या t लेना है it depends upon population variance is known or population variance is unknown okay if my confidence interval is increasing then my this thing reliability factor will also increase margin of error will also increase confidence interval will also increase 1 minus alpha increase होता है तो confidence interval increase होता है okay but if my sample size increases अगर मेरा सैंपल का जो साइज है अगर पहले मैं 10 सैंपल से डील कर रहा हूँ फिर बाद में 20 सैंपल से डील कर रहा हूँ तो मेरा मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाएगा बिकॉज मोर द सैंपल्स लेसर द एरर वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस सैंपल साइज इंक्रीज होता है तो मार्जिन ऑफ एरर कम होता है और कॉन्फिडेंस इंटरवल कम होता है ओके द मोर द सैंपल साइज लेस विल बी द एरर ओके नाउ विल गो विद दिस ओके समझो कि ए बी सी डी एफ जो है ये ग्रेड है इसके बाद ए माइनस आता है देन बी प्लस आता है बी आता है बी माइनस देन सी यहाँ उसके बाद सी प्लस सी माइनस एंड एटसेट्रा ओके सो यहाँ एफ प्लस होता है एफ प्लस तक आप पास हो सकते हो लाइक एफ प्लस भी फेल ही होता है बट स्टिल लाइक वी हैव अ कॉन्फिडेंस इंटरवल ओके तो हमारा 100% कॉन्फिडेंस है कि बच्चा इसी ग्रेड के अंदर आ सकता है राइट nobody can score below f nobody can score above a is the highest score f is the lowest score okay lowest grade लेकिन हमने 99% कॉन्फिडेंस ये लगाया 0.01 अल्फा से सो इट कम्स टू a माइनस एंड f प्लस ओके 50% कॉन्फिडेंस लगाया अल्फा इक्वल्स टू 5 ये c प्लस f प्लस भी हो सकता है एल्स ऐसा भी आ सकता है a प्लस से c प्लस भी हो सकता है ओके a माइनस से c प्लस भी हो सकता है लाइक फ्रॉम a माइनस टू c प्लस द सेम थिंग ओके ऐसा भी हो सकता है वी कैन नॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कि कौन से तरफ आएगा ओके नैरोअर इंटरवल बट कंटेन्स द मीन इन ओनली 50% ऑफ द क्लासेस मीन हमें 50% ऑफ द क्लासेस में ही डिपेंड कर रहा है जहां 50% का भी मैं मीन निकालता हूं वही मेरा एक्चुअल मीन आ रहा है ओके दिस इज द एग्जांपल that's the thing that I want to say so now this is the end of the topic of today's lecture okay but now till now we have measured confidence interval for single population हमने single population ही लिया था ना जितने भी हमने किए थे ये सिंगल पॉपुलेशन ही था एक ही सैंपल से कर रहे थे अभी हम दो पॉपुलेशन से करेंगे सेम थिंग ओके population variance known and population variance unknown so now we'll be applying confidence interval for two populations okay just this is the last slide for today I have a different ppt I'll be merging those slides later
This is the sample. Dependent, independent. Okay. Dependent काइंड ऑफ सैंपल जो होता है वो एक दूसरे से डिपेंड करता है. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक सैंपल P1, ये S1 एक सैंपल हो गया जिसमें 10 आउटपुट्स हैं, लाइक 10 डेटा सेट है. S2 एक सैंपल ले लिया. ओके. तो ये दोनों कोई तो भी एक रिलेशन में है. जैसे हमने वो मैक्सिकन डॉलर एंड सॉरी न्यूयॉर्क डॉलर एंड मैक्सिकन पेसोस देखा था. वो एक दूसरे से रिलेटेड थे, करेंसी एक्सचेंज था दोनों का. तो एक दूसरे से रिलेटेड है तो फिर ये आसान है, इसीलिए आप खुशी खुशी सॉल्व कर लोगे. लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है, पता ही नहीं कि कौन सा डिपेंडेंट, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो ही लगा पा रहे हो. लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, लाइक यू आर एबल टू अप्लाई सम प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल बिटवीन दीज. ये अल्फा नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल है. सो बट इफ इट इज इंडिपेंडेंट, यहाँ आप प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल ही नहीं लगा पा रहे हो, देन इट वुड बी डिफिकल्ट. तो उसके लिए हमने 3 केसेस अलग अलग से किया है. Population variance known but assumed to be equal, population variance known but assumed to be different. So we'll be completing this tomorrow. Okay. ये statistics थोड़ा लंबा चलेगा मुझे लगता है, but still we'll try to make it as short as possible and we'll be completing it. ये जैसे ही खत्म होता है we'll be starting with R programming. Hope everybody has installed R. Still, if you not have installed, I'm giving you time till this Saturday. So please complete this R installation before Saturday. Okay.